गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ब्लैक होल। मोहब्बत 4 हरफों की बड़ी लंबी कहानी है मगर तुमको सुनानी है। और ये कहानी कुछ यूँ है तवील के बस एक लम्हे को ही नज़रें मिली थी मगर फिर बात लंबी हो गई थी। जिसे समझा था बारिश एक शब की वही बरसात लंबी हो गई थी। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एल्विस प्रेस्ले की लिरिकिस्ट कहती हैं, वाइस मैन से ओनली फूल्स रश इन बट आई कैंट हेल्प फॉलिंग इन लव विथ यू। आज का उन्वान है वाई डू पीपल फॉल इन लव। चचा गालिब कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का, कहकर उन्होंने तो अपना कलम तोड़ दिया। लेकिन आज हम शायरी और गीत निगारी से परे ये देखेंगे कि फ़लसफ़े के डोमेन में मोहब्बत क्यों होती है, लोग क्यों इस मंझधार में या इस समुंदर में खुद छलांग मार लेते हैं। आज हम जर्मन फ़िलासफ़र शोपेनहावर, जिनकी वफ़ात 1860 में हुई, उनके नुक्ता नज़र जो उन्होंने अपने ऐसे मेटाफिज़िक्स ऑफ लव में पेश किया, उसके कॉन्टेक्स्ट में इस मौजू को देखेंगे। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर स्पीकर मियां तलहा ज़हीद। और उनके तारुफ़ के लिए ये कहना काफ़ी होगा कि तलहा होस्ट्स एन इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग वीडियो एंड ऑडियो पॉडकास्ट titled The Intelligentsia, where he engages in academic discussions with esteemed intellectuals, providing a platform for thought-provoking conversations. इससे पहले कि हम ये सेशन स्टार्ट करें, ओनली वन रिक्वेस्ट, और वो ये कि काइंडली अपने सेल फोन्स जो है वो साइलेंट मोड में कर लें और महबूब की याद आपको ज़रूर आए लेकिन उसकी कॉल ना आ जाए। लेट्स स्टार्ट नाउ। तलहा प्लीज़। थैंक यू। Thank you. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Talha, as you have already been introduced, and I host a podcast, The Intelligentsia, जिसका पर्पस है above the surface conversations को फ़रोग़ देना। Above the surface means normally election कब हो रहे हैं, establishment क्या कर रही है, politicians कब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इससे हट के जो फ़िलासफ़ी हमारी पॉलिटिक्स को, सोसाइटी को, इकोनॉमी को गवर्न करती है, उन मौज़ूआत पे बात करना और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डीकंस्ट्रक्ट करना फ्रॉम फ़िलोसॉफ़िकल थियोरेटिकल लेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट ब्रॉट मी हियर, यानी फ़िलासफ़ी से रिलेटेड इस टॉपिक को डील करने का ख़्याल कैसे आया। तो आई लाइक प्लेइंग विद आइडियाज़, यूनिक आइडियाज़, रेडिकल आइडियाज़। कोई भी ऐसी थॉट हो जो कि दैट ब्लोज माई हेयर बैक, एज विल सेड इन गुड विल हंटिंग द मूवी। आई एन्जॉय लिसनिंग टू सच आइडियाज़, आई एन्जॉय रीडिंग सच आइडियाज़। तो ऐसे आइडियाज़ ज़्यादातर फ़िलासफ़ी में ही मिलते हैं, अंडरस्टैंडेबली। सो आई बॉट अ बुक, विल डुरांस द स्टोरी ऑफ फ़िलासफ़ी। जब मैंने पढ़ना शुरू की तो मैंने देखा कि अरिस्टोटल का भी तारुफ़ है, वोल्टेयर आ गया, बेकन आ गया, बहुत सी डाइवर्स आइडियाज़ सीखने को मिले। लेकिन वन ऑफ द मैनी आइडियाज़ दैट fascinated me was Schopenhauer's idea of metaphysics of love later, लेकिन उससे पहले the will to live, the will to reproduce, the world as my will and idea, the title of his chief work. तो मैंने उस बुक से क्लू लेकर फर्दर फिलोसोफर्स को परस्यू करना शुरू किया थोड़ा बहुत, और देन आई सॉर्ट कि यार ये द वर्ल्ड एज माई विल एंड आइडिया, जो उसका मेन टेक्स्ट है, मेन वर्क है, इट्स वेरी डिटेल्ड, हैवी। लेकिन मैंने सोचा कि वाई नॉट पहले एसेज पढ़ लिए जाएं। सिंपल होते हैं, छोटे होते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड भी होते हैं, एज शोपेनहावर राइट्स। एसेज पढ़ते पढ़ते मेटाफिजिक्स ऑफ लव आई केम अक्रॉस दिस, एंड व्हेन आई रेड इट, इट फैसिनेटेड मी। जो एक डिमांड थी रेडिकल आइडियाज़ से खेलने की, वो इस ऐसे ने बहुत अच्छी तरह से पूरी की। लेकिन बिफोर वी बिगिन, let me take you back to my 8th semester in my university.
I was writing a thesis in my 8th semester. It was about India, Pakistan, Pulwama, Balakot armed conflict. Why two states decided to fight this war? कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने इन दोनों स्टेट्स को इन्फ्लुएंस किया ऐसे लीथल एक्शंस लेने पर, फ्रॉम द लेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, आयर थियरी एट्सेट्रा. जब मैं अपना प्रपोज़ल अपने सुपरवाइज़र को सबमिट करवा रहा था तो मैंने उसमें एक सेंटेंस लिखा. वो सेंटेंस ये था कि कुछ ऐसा था कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट मे बी द ट्रूथ, इंडिया कंसिडर्स पाकिस्तान टू बी अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म. वो उस लाइन में जा रहा था, उस डिबेट को टच कर रहा था. हेयर्स द लाइन. So my supervisor, as all supervisors in the modern age, digital age do, उन्होंने comments किए मेरे word document पे. ये जो word था truth, regardless of what may be the truth, इसको highlight किया और साथ में उसके एक comment दिया जो कि शायद उन्होंने वैसे ही किया हो, लेकिन उसने मुझे बहुत ज़्यादा change किया उसे एक comment ने. वो comment ये था कि it is too ambitious to claim something as truth. यानी हम कोई टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, कोई बुक पढ़ लेते हैं, कोई हिस्ट्री की किताब पढ़ लेते हैं, ख़ास तौर पे जब हम नई नई रीडिंग शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि शायद जो हम पढ़ रहे हैं वही अल्टीमेट ट्रूथ है और फिर हम उसको डॉगमेटिकली परस्यू करना शुरू कर देते हैं. ये बताने का मकसद ये था कि जब हम इन आइडियाज़ को आज समझने की कोशिश करेंगे, द वर्ल्ड एज माई will and idea and metaphysics of love and Schopenhauer's ideas, it should be understood in advance it is not the truth. It is the opinion of a philosopher and a work which I personally found to be very fascinating, and I guarantee that you will too. You will connect to it, most of you. After the session, after my briefing of those ideas, there won't be any question answer session. Why? Because I'm not an expert. लेकिन there would be a discussion session. मेरे बहुत से friends हैं जो कि जिन्हें पता था talk होना है, तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत cheap से questions तैयार करके रखे हुए हैं advance में, तो to their disappointment जो अभी तक पहुँचे नहीं हैं. लेकिन what I would like you to do is कि आप सुनते हुए आपके माइंड में बहुत सारे ख्यालात आएंगे. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक नोट्स. इफ़ यू हैव अ पेन एंड पेपर फाइन, इफ़ नॉट यू कैन टाइप ऑन योर फोन. ट्राई टू राइट डाउन वट एवर थाट्स कम इन टू योर माइंड. वाई? क्योंकि आई वुड वॉन्ट के आफ्टर माई ब्रीफिंग ऑफ दोज आइडियाज़ there is a replication of the French salons or the majlis of the Islamic golden age, जहाँ पे free debate होती थी without hosting any animosity towards those who disagree with us, with respect, with tolerance towards the ideas which others seem dear to themselves. Metaphysics of love समझने से पहले it is important to understand the essence of the chief work of Schopenhauer, The World as Will and Idea. इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक चीज़ जो metaphysics of love से relate करती है वो ये है कि there is something known as will which drives all human beings, all animals, all plants, the entire universe in fact. Will क्या है? For instance, we see some things around us and that is the conscious reality which we have. Or below the conscious there is the unconscious. We know about the conscious but we are not aware about the unconscious. Unconscious का हमें शायद psychoanalysis से पता लग जाए, शायद ड्रीम्स को स्टडी करने से पता लग जाए, लेकिन हम उसमें डायरेक्टली टैप नहीं कर सकते आई सपोज. लेकिन इवन डीपर देन द अनकॉन्शियस इज द विल. हाउ कैन इट बी डिस्क्राइब्ड? इट इज़ अ फोर्स or a very powerful vital force in
all the human beings according to Schopenhauer. इसको desire भी कहा जा सकता है. Will को समझने के लिए in order to explain it better, the concept, मैंने इसको categorize किया. The will to want, the will to live, and later the will to reproduce. Will to want ये है कि एक अक्सर एक माइंड में ख्याल आता है कि we want something, and in order to get it, to obtain that thing, we invent reasons, बहाने तलाश करते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए. And Schopenhauer describes it as, I quote, "We do not want a thing because we have found reasons for it. We find reasons for it because we want it. We invent elaborate philosophies and theories to cloak our desires." जब किसी शख्स ने ये इरादा कर लिया कि I want something, then logical explanation or argumentation against his or her will to want something is futile. आप किसी को convince नहीं कर सकते through logic. जैसे एक बच्चा है, उसको आप जितना मर्जी समझा लें कि no, this is wrong, don't do this, the child won't agree with your opinions, जितना मर्जी उसको बता दिया जाए. और एक और एस्पेक्ट विल का ये है कि इट इज़ बियॉन्ड इंटेलेक्ट. इमेजिन, इसकी दो एग्जाम्पल्स हैं जिससे ये समझा जा सकता है कि हाउ विल इज़ बियॉन्ड एंड मोर पावरफुल देन द इंटेलेक्ट. एक ये है कि शोपेनहावर ने ये एक इमेजरी क्रिएट की है कि इंटेलेक्ट की मिसाल ऐसी है. द इमेजरी इज़ कि दो लोग हैं, एक शख्स है जो कि ब्लाइंड है और वो वॉक कर रहा है, and the person is able to walk, can walk, physically capable, और उसके कंधे पे एक और शख्स है who cannot walk but he can see. जो ऊपर कंधे पे बंदा है वो ये समझ रहा है कि he is in control but he is not. वो उसको गाइड करने की कोशिश कर रहा है चलने वाले बंदे को, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रहा because he is blind. इंटेलेक्ट की मिसाल ऐसी है, वो बंदा जो कि कंधे पे है. विल की मिसाल ऐसी है, वो बंदा जो कि चल रहा है ब्लाइंडली वॉकिंग टूवर्ड्स समथिंग. और दूसरी मिसाल ये है कि द इंटेलेक्ट इज, इट विल गेट इंटरेस्टिंग इन अ व्हाइल जब वो लव का सीन आएगा. लेकिन इंटेलेक्ट की मिसाल ऐसी है कि इंटेलेक्ट इज मेरली द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स. एक स्टेट के अंदर जो कुछ चल रहा है उसका अंदाज़ा हमें इन टर्म्स ऑफ फॉरेन रिलेशंस तब होता है जब मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स से समथिंग. लेकिन अंदर जो मैकेनिक्स हैं, जो पॉपुलेशन है, जो सोसाइटी है, उसकी डायनामिक्स हैं, उसकी डिमांड्स हैं, उनको इग्नोर कर दिया जाता है. सिंपली ये कि द विल ड्राइव्स अस. नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर सेंट्रल टॉपिक, विल की एक और डायमेंशन ये है कि इट इज़ द विल टू लिव, जिसको आप सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी कह सकते हैं. अ विल टू मैक्सिमाइज लाइफ. जैसे एक सीड है जिसको आप रख दें, उसके अंदर विल रहेगी. जब उसको अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस, इन्वायरमेंट मिल जाएगा तो द विल कम आउट एंड स्टार्ट टू ग्रो. और ये ह्यूमंस में भी है. मे बी वी फाइंड अ जॉब, वी want to earn something. In my opinion, Pakistan में जो brain drain है, people are trying to look for opportunities abroad. Why? Because the environment has become for some so suffocating that it is becoming difficult for everybody to live here. Or at least this is what they imagine, regardless of what may be the reality. अब इस will का greatest enemy डेथ. और ये विल नहीं चाहती कि वो ख़त्म हो जाए. ह्यूमन्स कम एंड गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड बट द विल सर्वाइव्स. इसकी मिसाल ऐसी है कि ह्यूमन्स, द विल इज सर्वाइविंग थ्रू जनरेशंस. दैट इज़ the crux
of this explanation of the will to live. Now, in order to defeat deaths, another side of will appears, that is the will to reproduce. Now, an interesting thing which I was reading yesterday while preparing for this was sexual cannibalism. When a female spider, in some species, when a female spider successfully mates with a male spider, the male spider presents himself to her for nutrients so that she can survive. That is the will according to this explanation at play. ये कहा जाता है इन किताबों में कि the will to reproduce is the strongest instinct in humans, animals and all living beings. And Will Durant adds that it is, as I mentioned earlier, it is beyond intellect, beyond knowledge. And he jokes in the story of philosophy that even philosophers occasionally have children. Now, having explained कि will क्या है, will to live क्या है, will to want क्या है, will to reproduce क्या है, उसके पीछे notion क्या है, to survive and to defeat death, we can move directly finally to Metaphysics of Love, the essay. Now, in order to fully understand the messages conveyed in this essay, it would be helpful if you can elicit your love in your minds as I continue to discuss all of these things. Now, first thing, why is there an obsession with the topic of love? You will find it in daily conversations, you will find it in dramas, in history, in music, in poetry. ऐसी मूवीज़ जिनमें शायद कोई काम नहीं होता एक रोमांटिक लव स्टोरी का, उसमें भी ऐड की जाती है. वाई? बिकॉज शायद इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू हैव इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स. नाउ हैविंग मेंटेन्ड कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी एवोल्यूशन कैसे होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट स्टार्ट्स विद एन इमोशन, a weak emotion. When fed, it becomes a passion. When fed further, it becomes an uncontrollable passion. I hope you would all agree with this. And then it becomes an obsession. If taken to greater heights, it drives people to a lunatic asylum. And then in some cases, it also, as you might have heard in news channels, in newspapers, it leads to suicide. This is the evolution. We are trying, at this stage, we are just trying to understand the importance, lethality of love. Schopenhauer adds कि इसके consequences and impacts क्या होते हैं. For that he writes, I quote, कि love influences adversely the most important affairs, that it hourly disturbs the most earnest occupations. It does. That it sometimes deranges even the greatest intellects for a time. It knows equally well how to plan the most complicated and wicked affairs. That life, health, riches, rank and happiness are sometimes sacrificed for its sake. How many of you would agree with this? Nobody, I suppose. Why do people fall in love? Coming to the central question now. क्या, as the title goes, metaphysics of love. Metaphysics is that which is beyond physics, which is beyond observation through five senses of human beings. Things we cannot see, but they have their impacts
on our lives. Why do people fall in love? The answer is that Schopenhauer writes, and I quote, "Every love, however ethereal, springs entirely from the instinct of sex and determines nothing less than the establishment of the next generation." We are trying to understand कि love क्या है. Why do people fall in love? The answer is given by Schopenhauer. It is the instinct of sex, compelled and generated by the will to live, the will to exist, the will to defeat death. The instinct of sex, compelled and generated by the will to force the existence of a specific human being into this world. What is the purpose of love? Species चाह क्या रही है? Will of the species क्या चाह रही है? To use the human beings, the individuals, to bring a specific type of individual into this world, an individual with certain characteristics. There are many factors which decide कि love कब होगा, किसके साथ होगा, कैसे होगा. Those characteristics I will come towards later. Birth of a new being. He says, I quote, that growing affection of two lovers for each other is in reality the will to live of the new being, of which they shall become the parents. Indeed, in the meeting of their yearning glances, the life of a new being is kindled. एक है विल जो कि इंसानों के अंदर है, एक है विल जो कि पूरी इंसानियत को गवर्न कर रही है. द विल ऑफ द स्पीशीज ऑफ द होमो सेपियंस, द ह्यूमन बींग्स. वो द विल ऑफ द स्पीशीज यूजेस द इंडिविजुअल्स टू अटेन इट्स ओन एंड्स. द एंड बीइंग दैट द बर्थ ऑफ अ स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग. I hope it's clear up until now. Now, the alarming thing is कि ठीक है, it's fine if the will of the species is using individuals to attain its own ends, fine. But the problematic thing for the individuals, the alarming thing, is that the individual and the species are at odds with each other. What may seem as the interest of the species is clearly not the interest of the individual, although it may seem that it is. When love occurs, an individual submits to a greater authority and loses control over the intellect. Why? Because the will is influencing the intellect. I quote from Schopenhauer, "The ecstasy with which a man is filled at the sight of a beautiful woman." He's writing from a male-dominated perspective, but it applies to both. The ecstasy with which a man is filled at the sight of a beautiful woman, making him imagine that union with her will be the greatest happiness, is simply the sense and interest of the species. Interestingly, when the interest of the species is attained, जब species, the will of the species का मकसद पूरा हो जाता है, this illusion, this sense of happiness that a person thinks that a certain person will bring into his or her life vanishes. अब एक और सवाल आता है कि what does the instinct want? वो क्या चीज़ें हैं जिसकी तरफ
the will of the species drives the individual. That is two things to sum it up: beauty and perfection. Not according to the sense of the individual, but according to the sense of the species. He says that it is really instinct aiming at what is best in the species and induces a man to choose a beautiful woman, although the man himself imagines that by doing so he is only seeking to increase his own pleasure, but the real aim is that the species is to be preserved as pure and perfect. What happens then when a person falls in love? First, there is the instinct that arises, an instinct that we call love at first sight. Then there is the ecstasy, the illusion of an infinite happiness that a person will achieve when his or her love is requited. And then Schopenhauer says that he or she foolishes enter into a love affair or a foolish marriage, and even sacrifices his honor and his life. Many faces are smiling because perhaps they are realizing that what they have been into up until now. When the purpose is realized, the purpose being the realization of the will of the species, when the purpose is realized, the illusion disappears, and the individual does not realize, but in fact is duped by the species. Now, there are many arguments in favor of this grand argument that this is the true nature of love. The first is that in the beginning of the essay, Schopenhauer asks the reader, और essay के शुरू में maybe 5-6 paragraphs के बाद, it's an interesting essay, 30-31 pages at max. वो उन लोगों को address करता है that are already in the influence of this emotion. And he says that the creature whom you are idealizing today in sonnets would have been ignored almost entirely by you if he or she had been born 18 years previously, because all of the characteristics which the will of the species would have wanted would then in that case have been faded, disappeared, gone. This was the first argument in the favor of this thesis of his. The second is that possession. He claims that if a person cannot have his love returned, he would simply be content with possession. That explains maybe forced marriages, not in the name of religion, other forced marriages, compelled marriages, in some cases which we normally hear around us, that involves to some extent threats to the person who someone claims to love. Possession. The third one is unrequited love, the love that is not being returned. He says that, I quote, a man whose love is not returned frequently finds consolation in giving handsome presents to a woman, in spite of her dislike, or making other sacrifices so that he may buy her favor. Trying to impress the lover, the object of love, through various stratagems, through various tactics, etc., etc. Why? Because the will of the species wants him or her to do that.
it wants him or her to attain its ends. लेकिन कौन से ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेसिस पे मेल या फीमेल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अदर जेंडर? And this criteria is very important for the species because after all the type of the species is at stake. But before that there is a difference, another explanation जो कि मैंने पहले बताया, possession, unrequited love, etc., etc., was the difference between the love of men and women. He makes an observation that the love of men is inconstant and decreases with time, while the love of a woman is constant and increases with time. Why does this happen? This happens because of two reasons. First, nature demands the preservation and, if possible, increase in the species. And the second reason is that it wants women to take care of the protector of the future offspring. Now, there are two types of considerations which will determine the criteria which compels a person to fall in love. Why do people fall in love? Metaphysical to pata lag gaya, lekin coming towards the physical side. Now there are certain absolute considerations for men. At this point, a few friends of mine have made an observation that he objectifies men and women and the object of love, whatever. But we are just discussing things. The absolute considerations for men is age, health, skeleton, teeth, and beautiful face. The absolute considerations for women, youth, height of beauty, etc. But an important point that I found important was that, and it may sound a bit misogynistic as well, is that it is not the intellect, but the will, the courage, and even goodness and honesty that drives the sense of love in women. Intellectual gratification for them is useless. And then there are certain relative considerations which vary from person to person. उसके दो क्राइटेरियाज हैं, दो फर्दर सब पॉइंट्स हैं. एक ये है कि an individual will be attracted towards that which he himself is deficient in, relative. And the second criteria is neutralization. A person will seek to neutralize his one-sided personality through a relation with the other person, which has the opposite of that strength or weakness that a person has. For instance, a manly man will desire a womanly woman, he says. But ये स्क्रूटिनी कौन करता कि रिलेटिव कंसिडरेशंस क्या हैं, एब्सोल्यूट कंसिडरेशंस क्या हैं, एज क्या है, अपीयरेंस क्या है, स्केलेटन क्या है, यूजेस द वर्ड स्केलेटन. ये स्क्रूटिनी की जाती है जी क्यूपिड की तरफ से. द क्यूपिड, द बेबी, बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस हैं. द बेबी विद विंग्स एंड बो एंड एरो and striking individuals, love at first sight, etc. But this Cupid is the will of the species. The Cupid is always meditating, always speculating. इसका evidence क्या है? First, which I found
to be there was the chai trolley culture in our society. Are you familiar with the chai trolley culture? If you're familiar, you can raise your hands. The chai trolley culture is a term used in feminist discourses in context of Pakistan. It means that when a family visits another family for a rishta, the girl brings a trolley of chai and refreshments, etc. It's part of our culture. And while that play is being done, that act is being performed, she is being heavily scrutinized by everybody in the room. First. Second, exchange of penetrating glances between two people who seem to be attracted towards each other. And the third evidence is that, for instance, two people fall in love after scrutinizing one and each other. But Schopenhauer claims that if something previously unnoticed appears, the passion will become less intense. क्योंकि क्यूपिड ने पहले वो चीज़ ऑब्जर्व नहीं की थी, एकदम से ऑब्जर्व की, तो the will of the species that is compelling the two people to get together would start to dissipate. क्यूपिड की बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि शायद इस डिस्कशन को बहुत अच्छे से समराइज कर रही हैं. Cupid, again, the will of the species. The first characteristic is that बहुत सारी representations हैं, लेकिन जो representation Schopenhauer ने यूज़ की है अपने ऐसे में, वो ये कहती है कि the Cupid is blind. The Cupid is blind with respect to earthly conditions, the circumstances of life, the defects of the other individual. Why? Because the individual who is a victim of the will of the species become submissive towards a greater authority that is more powerful than the intellect, the will. एक तो ये है blindness, दूसरी है darts, the arrows that he carries. The darts explain the love at first sight, sudden impulses, the desire to possess. और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंटरेस्टिंग है, विंग्स, कि जब उसका पर्पस पूरा हो जाता है तो फिर वो गायब हो जाता है अपने विंग्स को इस्तेमाल करके. द फिकलनेस, द डिसइल्यूजनमेंट आफ्टर पोजेशन. As I said earlier, man finally realizes कि he or not, कि he has been the dupe of the will of the species. I hope कि अभी तक you would have gotten an idea what Schopenhauer is trying to say. I've tried my best. लेकिन कुछ questions हैं, कुछ questions नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, observations हैं जो कि further clear होती हैं इस particular essay से या इस idea, इस philosophy से. Number one, the coldness that the object of our love shows us by not returning our love. The coldness kills us. The unresponsiveness kills us. And it appears to be cruelty to the receiver of that coldness. But the lover does not give up. He or she continues to try to attain the ends of the will of the species. The second thing is, Schopenhauer says that what is the success rate according to him of love marriages? He says, people who marry for love are generally unhappy because they do not do that for the sake, because they
do that because for the sake of the next generation rather than the present generation which is there in this world. And he claims that the marriage of convenience, which are normally arranged by the family after considering 1,000 factors that influence them, are more successful than the marriages of love. जिस कोल्डनेस का मैंने जिक्र किया, the coldness of the pain, the uneasiness of unrequited love, the lover sighs and grieves. But Schopenhauer claims that the sigh of the lover and the grief of the lover is in fact the sigh and grief of the species, because it wants something, but the earthly circumstances are not allowing it to achieve its ends. Does love lead to happiness? Well, Schopenhauer says that no. Happiness again is something very subjective, but according to in this context, happiness is the illusion that appeared when a person sees another person for the first time. The scenario he or she imagines that he or she will be happy forever. वो क्या है कहानियों में अक्सर एंड पे यूज़ होता है, ever ever after, something like that, happily ever after. उसकी वो दो reasons देता है. First, कि love frequently runs counter to individuality. The individual is not concerned, the species is concerned. The second reason is that it blinds a person to the defects existing in the other person, to the defects which promise a lifetime of misery. Finally, at the end of the essay, he makes an observation. Acha, Schopenhauer was a pessimist for credible reasons, because the socio-political, economic circumstances of Germany, Prussia at that time were not favorable to optimism. He did not marry, he did not have a child, he did not have a wife, he had no friends, he used to live with a dog. उस dog का भी नाम था आत्मा something. और he was a pessimist, and he writes, he expresses the desire that all of this existence of humans is in fact the existence of the will. The will wants to live. It uses human beings to perpetuate its survival. And he claimed that he believed that this misery, which was clearly misery for him, must come to an end. So he ends the essay with another interesting observation, that why do lovers meet discreetly, secretly, timidly, without informing the others? He says at the end of the essay, the last line is, I quote, "And yet, amid all this turmoil, we see a pair of lovers exchanging longing glances. Yet why so secretly, timidly and stealthily? Because these lovers are traitors, secretly striving to perpetuate all this misery and turmoil that otherwise would come to a timely end." And that was all. Now we can have the discussion if you want. हेलो, या आपकी साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है, पूछ सकता हूँ मैं? Not a scientific background, sir. Social scientist. उसकी वजह ये है कि साइंटिफिक बेसिस जो है लव की, वो
इतनी वेल डिफाइंड है, उसका पूरा मैकेनिज्म जो है, पूरी मैकेनिक्स लव की, वो एक एक मॉलिक्यूल के लेवल पे एक्सप्लेन हो चुकी है। और उसमें उस हिसाब से तो ये चीज़ बिल्कुल ऑब्सोलीट है, इसकी कोई सपोर्ट नहीं है साइंस में। विल का जहाँ तक आपने बताया कि विल डेरिवेटिव फोर्स है लव के लिए, वो तो हर चीज़ के लिए है। विल तो लव ही के लिए नहीं बल्कि दुनिया के हर चीज़ के लिए। आप पानी पी रहे हैं, ये भी विल की है। तो फिर आपने शोपेनहावर का जिक्र किया कि उसके पास कुत्ता जो था, कुत्ते के साथ रहता था। उसने कभी ये नहीं सोचा कि कुत्ते को उससे इतना लव क्यों है। ह्यूमंस की बात की हो, वो ये नहीं सोचा कि कुत्ता क्यों लव करता है उसको। हाँ, उसकी वजह ये, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन होता है, जो लव हार्मोन भी कहलाता है, और वो बेसिस है लव की। वो कुत्ते में भी होता है। हाँ, कुत्ता जब आता है दुम हिलाता हुआ, मेरा कुत्ता मुल्क से बाहर है, मैं जाता हूँ 6 महीने बाद भी आता हूँ तो वो लिपट जाता है मुझसे और किसी तरह नहीं छोड़ता है। तो वो उस वक्त क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन का रश होता है। ऑक्सीटोसिन बहुत बड़ी मकदार में कुत्ते में जनरेट होता है, और मालिक में भी होता है, मुझ में भी होता है, मेरे कुत्ते में भी होता है, और दोनों गले मिलते हैं। और ये कि इसके अलावा और भी हार्मोन्स हैं। और बच्चा, जब एक और बात बताऊं मैं, कि जब बच्चा पैदा होता है, जो चाइल्ड डिलीवरी जो होती, चाइल्ड बर्थ होती है, तो ऑक्सीटोसिन माँ के बॉडी में भर जाता है, रश करता है। तो वैसे ही बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको गले से लगा लेती है, या बहुत सी मोहब्बत का एक समझिए कि बहुत मकदार में ऑक्सीटोसिन पैदा होता है। अगर वो ना हो तो माँ पहचाने भी नहीं बच्चे को, अब गले लगाना तो दर किनारे है। और मेल और फीमेल एनिमल्स में भी, आपने मुस्तकिल ह्यूमंस की बात की शोपेनहावर के सिलसिले में, लेकिन मेल और फीमेल एनिमल्स में भी यही मैकेनिज्म है। ख़ास तौर से मैमल्स में इसका है, ऑक्सीटोसिन का है। अब ऑक्सीटोसिन का अगर फार्मूला देखें तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, ये वो का फार्मूला कभी आप गूगल सर्च कीजिएगा घर जाके, ऑक्सीटोसिन, आप देखिएगा कि इसमें क्या चीज़ ऐसी है। वो हर चीज़, जितने भी बॉडी में हार्मोन्स हैं, ये सब का इंटरप्ले है। मतलब मेल हार्मोन्स हैं, फीमेल हार्मोन्स हैं। फीमेल हार्मोन्स में से प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, जो कि फीमेल हार्मोन्स हैं, जो कि इसमें मदद करते हैं, इसमें ऑक्सीटोसिन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उसके अलावा मेल हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरॉन है। टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मेल्स में कम होता रहता है एज के साथ साथ। अब हमारा जो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल था 14-15 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में, उससे बहुत कम है हमारी एज में, जो भी है हमारी एज, तो उसमें बहुत कम है, और कम होता रहता है। इसीलिए सेक्स ड्राइव कम हो जाती है, रोमांस कम हो जाता है ओल्डर लोगों में। हमें नहीं है कम, लेकिन हमारी उम्र के बहुत से लोगों में हो जाता है कम। उसकी वजह ये है कि टेस्टोस्टेरॉन जो है, अच्छा टेस्टोस्टेरॉन का आप इंजेक्शन एक दे दें अगर, तो फिर वो चीज़ हो जाती है, दोबारा वो चीज़ रिवाइव हो जाती है। मैं बताऊं आपको, ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहता हूँ, और लोग भी हैं। हाउस जी तो वो हाउस स्पैरो जो है, गौरैया जो कहलाती है, छोटी चिड़िया जो होती है, इसकी टेस्टिस जो है 1 मिलीमीटर की होती है। 1 मिलीमीटर की टेस्टिस इसकी होती है, मेल स्पैरो की। इसको अगर आप काट दें, अच्छा, तो वो जब तक ये रहती है तो ये हार्मोन जो होता है, जो इसके अंदर जो होता है, इस चिड़िया के अंदर टेस्टोस्टेरॉन होता है मेल में, तो उसकी वजह से वो बड़ी एक्टिव होती है, दूसरी चिड़ियों को, फीमेल चिड़ियों को चेस करती है, और दूसरे मेल स्पैरो से लड़ती है, और बड़ी इसमें हर तरह की एक ड्राइव होती है, और बड़ी वाइटैलिटी होती है।
वो 1 मिलीमीटर का जो टेस्टिस है इसकी, उसको काट दें अगर आप, तो बिल्कुल जल, उसे चिड़ियों से कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, और वो दूसरे मेल्स आके उसकी टेरिटरी में घुस जाते हैं और उसको मारते हैं, टूटे मारते हैं, सब करते हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंजेक्शन दे दें उसको दोबारा, तो फिर वही चीज़ हो जाती है। तो ये साइंटिफिक एविडेंस है टेस्टोस्टेरोन की कारकर्दगी का। तो ये मैं कह रहा हूँ कि पूरा ये लव का फिनोमेनन जो है ये बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन हुआ है, और मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो उस वक्त ये चीज़ जो है आपने फरमाई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और मैंने एंजॉय किया ये सब। लेकिन ये कि ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इसका यही है जो अभी अर्ज़ किया मैंने। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने कहा कि आदमी प्यार में इसलिए खुश नहीं होता कि वो नेक्स्ट मैंने नहीं कहा, शोपेनहावर ने कहा कि वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्यार करता है, और वो क्या, वो समझ नहीं है। दोबारा रिपीट करें कि प्यार में इसलिए खुश नहीं होता कि वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्यार करता है। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड देयर इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द स्पीशीज़। स्पीशीज़ का ये इंटरेस्ट है कि सर्टन, जो मैंने कंसिडरेशंस एक्सप्लेन की, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, क्यूपिड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्यूपिड चाह रहा है हासिल करना दो लोगों को साथ मिला के, दैट इज़ द विल ऑफ द स्पीशीज़। सो द स्पीशीज़ परपेचुएट्स। लेकिन जो इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उसमें कंसिडर नहीं की जाती। द क्यूपिड डज नॉट कंसिडर दोज रिक्वायरमेंट्स। जैसे ही वो इल्यूजन ख़त्म हो जाता है, जैसे ही स्पीशीज़ का इंटरेस्ट अचीव हो जाता है, the individual is exposed to other realities, the other defects of the personality, realities of the personality. And जैसे उसने कहा कि it promises a lifetime of misery because he or she married for the sake of love, the love that was enforced and compelled by the species. So that is the reason he says कि this is so. थैंक यू वेरी मच फॉर द। अच्छा, ये तो बाकी तो बात हुई। ये जो आपने कहा कि ये इसी की जो एक्सप्लेनेशन दी है, ये सिर्फ लव के इंस्टिंक्ट में नहीं है। ये अगर भूख भी लगी हो, तो जब आपको भूख लगी हो फिज़िकल, यानी आपकी बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है, उसमें भी आप पहले झपट पड़ते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद आपको उसकी स्मेल भी शायद महसूस हो, उसको गंदगी भी महसूस हो, या जो वटेवर। इसी तरीके से अगर आप खौफ के किसी आग लग जाए और आप दौड़ पड़ते हैं, तो हो सकता है आप किसी बंद गली में फंस जाते हैं। तो ये एक जो ड्राइव है, तो ये हर इंस्टिंक्ट में रिवील होता है। ये सिर्फ लव के साथ नहीं है कि लव में तो चूँकि आपने एक्सप्लेन किया, चूँकि आपका टॉपिक था वो बिल्कुल, तो ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट के जिसमें भी सर्वाइवल का है या जो तो उसमें ये रिवील होता है, और ये मैनिफेस्टेशन बिल्कुल बाकी इंस्टिंक्ट में भी है, जिस तरह ये भूख में है या फिर खौफ में है। अदरवाइज़ तो लव में भी यही होता है कि जिस तरह कहा ना, 14 साल में बंदा ब्लाइंड होता है, और फिर जब 40 में होता है तो फिर वो दे एनालाइज सो मेनी अदर फैक्टर्स एज वेल एट द सेम टाइम। लेकिन फर्स्ट इंस्टिंक्ट में फिर वो जो ड्राइव होती है वो उसी तरह ही करती है, और वो ब्लाइंडली ही करता है, क्योंकि ब्लाइंड। अच्छा, इसमें ये भी है कि दे आर नॉट सम पीपल जो एनालिसिस करता है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सीइंग से करता है। सीइंग का तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी ब्लाइंड पीपल, देयर आर सो मेनी डेफ पीपल, देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव द कैपेबिलिटी टू टच। लेकिन उसमें भी ये लव का इंस्टिंक्ट है, और वो दे फॉल इन लव, और उसका भी मैनिफेस्टेशन मौजूद होती है। तो दैट इज़ समथिंग बियॉन्ड एक जो एक हम एनालिसिस करते हैं। तो चूँकि अब शोपेनहावर के पास जो डेटा था जिसमें उन्होंने एनालाइज किया, वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त था। लेकिन सर ने जिस तरह बताया कि अब चूँकि डेटा बहुत अपडेट हुआ है, और हम तकरीबन, क्योंकि अब अपोजिट सेक्स के अलावा सेम सेक्स का आ गया, पता नहीं कौन कौन से इंस्टिंक्ट आ गई हैं, जिसको वो अब साइंटिफिकली
उसको इस्टेब्लिश भी कर रहे हैं और रिकग्नाइज भी कर रहे हैं. तो बस एक कमेंट थोड़ा सा. इस पे आई वुड लाइक टू ऐड फर्स्ट कि आपने जो बात की कि लव के अलावा भी इंस्टिंक्ट हैं, तो शोपेनहावर का प्राइमरी वर्क इज़ द वर्ल्ड इज़ माई विल एंड आइडिया. तो इसमें हमने फिर विल को समझने की कोशिश की. पहले विल में एक है विल टू लिव, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, द विल टू प्रोलॉन्ग लाइफ. उस विल की फर्दर एक्सटेंशन है कि इवेंचुअली अ पर्सन हैज़ टू डाई. तो हाउ विल द विल try to remain alive by the will to reproduce. तो जो metaphysics of love is not the primary work of Schopenhauer. Primary work is the world is my will and idea. तो ये है हाँ ये एक comment. Assalamu alaikum. Firstly, I would like to comment on सर ने जो अपनी थोड़ी सी बातें की चंद, उसमें ऐसा है कि ये जो आज का सेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन मेटाफिज़िक्स, और मेरा सवाल है वो मेटाफिज़िक्स ही की तरफ है, लेकिन मैं उसकी तरफ आता हूँ. बेसिकली सर जो आपने साइंटिफिक प्रोसेस बताया ऑक्सीटोसिन का और सारे हार्मोन्स का, और जो ब्रेन में जो एक्टिविटीज़ केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आई थिंक कि वो आपको मैकेनिज़्म तो बता देता है कि जब वंस आप किसी के साथ कोई अफेक्शनेट आपका रवैया होता है तो अंडरलाइंग प्रोसेस क्या होता है, सेंसरी प्रोसेस क्या होता है, ब्रेन के अंदर एक्टिविटीज़ क्या क्या हो रही होती हैं. बट आई डोंट थिंक वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर पाता है कि ये चीज़ें इन ऑफ इट सेल्फ पहले से हो क्यों नहीं हैं. और उसमें भी फिर अगर आप एक्सप्लेनेशंस में जाएं तो फिर वो डिटर्मिनिज्म आ जाता है कि क्या ये पहले से डिटर्मिन्ड है और चीज़ें एक दूसरे के कॉन्सिक्वेंस में चल रही हैं. तो बेसिकली मेटाफिज़िक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें वी ट्राई टू मेक सेंस ऑफ आवर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, क्योंकि वो साइंटिफिकली क्वान्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है उन सब को. एंड मेरी अपनी फील्ड आई एम स्टडिंग साइकोलॉजी, तो उसमें देर इज़ अ चैलेंज कि जो आप अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को कैसे क्वांटिफाई करके उसको साइंटिफिकली प्रेजेंट कर सकते हो. तो कमिंग टू द टॉपिक ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ लव की बात की, तो द आइडिया ऑफ विल इट्स आउट देयर, इट्स नॉट क्वाइट साइंटिफिकली टेस्टेबल एज सेड, और जो कि जनरल बात है कि इट्स नॉट एज साइंटिफिकली टेस्टेबल एज से साइंटिफिकली ग्राउंडेड आइडियाज़. तो व्हेन वी एंगेज इन द वर्ल्ड ऑफ मेटाफिजिक्स, इट्स अ collection of jumbled ideas and we're trying to untangle things or we're trying to get at something. कभी हम जिस ट्रुथ के परसूट में होते हैं कभी उनसे बहुत दूर चले जाते हैं, कभी we think we're very close to it. And I would bring religion into this के religious जो religion का मुकदमा है that is also grounded on metaphysical realms, on metaphysical basis. तो from a standpoint of philosophy, तो मेटाफिज़िकल रेल्म में एक आइडिया को दूसरे पर फोकियत या वेटेज किस बिना पे मिलती है? दैट इज़ द क्वेश्चन दैट आई वाज मीनिंग टू गेट टू. Well, I would not present myself as an expert on philosophy, but for the sake of discussion, जहाँ तक I am able to comprehend the question and able to elicit an answer, I suppose it is subjective. Schopenhauer was a pessimist, for example. He was a pessimist because there was no reason to be optimistic around him. But a person who is born in the golden age of every state, हर state की कोई ना कोई golden age आई है, वहाँ पे रह रहा है और पैदा हुआ है, that would be more optimistic. So there are many factors at play, I suppose. And it is subjective, or every philosopher preaches his work as the ultimate philosophy. So yes, that would be my comment, but I'm still exploring philosophy. I've not even read the major works, still touching the surface
of the genre. Thank you. गुड इवनिंग सर. सर पहले तो बड़ी मज़े की टाक थी. मैं अपने इसमें यही कमेंट दूंगा कि जो आपने बात की और जो सर ने बात की ये कनेक्ट होती हैं. बेसिकली जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है ना वो मैकेनिज़्म की है, लेकिन जो आप चीज़ बता रहे थे इट्स चूजिंग द पर्सन और चूजिंग द पार्टनर, वो किस बेसिस पे आप करते हैं. एंड उसके अंदर जब आप चूज़ कर लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वो इल्यूजन्स में आप चले जाते हैं. एंड द पर्पज़ यू वांट जब आपको मिल जाता है तो वो आपकी इल्यूजन्स ख़त्म हो जाती हैं. अब बात विल की है तो विल आप जिस आपने स्टार्ट में एग्जांपल दी कि इट्स जस्ट लाइक अ ब्लाइंड पर्सन, लेकिन एंड पे वो अपने ऐसे में ये भी तो कह रहा है कि ब्लाइंड पर्सन की जो चीज़ है वो गलत है, मतलब ये फॉर एवर के लिए वो उस पर रिलाई नहीं कर सकता. ऊपर से फिर आ जाती इंटेलेक्ट की बात. इंटेलेक्ट आप वो कह लें कि जो हमारे देसी कल्चर में आप कहते हैं कि अरेंज मैरिज जो करते हैं वो हज़ारों फैक्टर्स को सामने रख के करते हैं और वो हैप्पी मैरिजेज़ होती हैं लव की साइड से. तो मे बी देयर इज़ इंटेलेक्ट इन्वॉल्व इन द अरेंज मैरिज के वो चीज़ें फैक्टर्स वो देखते हैं, सारा करते हैं, तो वो हैप्पी मैरिजेज़ हैं. एंड द लव वंस आर नॉट. इसको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारी नहीं होती, बीच में ये है कि कोई गलती से कनेक्शन अच्छा भी लग जाता है, लेकिन ये है कि मोस्टली आर नॉट हैप्पी वंस. तो ये बात जो वो चीज़ बता रहे थे वो साइंटिफिक चीज़ें एक्सप्लेनेशंस वो मे बी लव दो भाइयों के बीच में तो प्यार हो सकता है, वो जिस तरह कह रहे थे कि एक ह्यूमन और एक अदर जो आपका पेट है उसके बीच में भी हो सकता है. दैट्स मे बी अनदर टाइप ऑफ लव यू मे से, बट हेयर इट्स द लव ऑफ स्पीशीज़, द लव ऑफ रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, वो जो बात कर रहा था. माफ़ कीजिएगा, मैं ये एक कमेंट और देना चाहता हूँ. इन लोगों ने जो सवालात किए हैं, एक तो ये है कि जो हेलो ये जी आवाज़ आ रही है. अच्छा, तो वो ये है कि जो डेथ है वो रिप्रोडक्शन जो है वो एक सबकॉन्शियस उसमें एक ये फीलिंग होती है कि वी आर एस्केपिंग डेथ. हम बच्चा पैदा करके एक तरह से डेथ एस्केप कर रहे हैं. हमारा जर्म प्लाज्म जो है, जर्म प्लाज्म वो हम यहाँ छोड़े जा रहे हैं इस दुनिया में. ये इसका एक्सप्लेनेशन है. और यही हकीकत भी है. और यही वजह है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है, मैरिज बहुत ही मुश्किल चीज़ एक है कि दो लोग एक दूसरे के नर्व पे सवार रहते हैं पूरी ज़िंदगी और एक दूसरे से को भुगतते रहते हैं. बहुत मुश्किल चीज़ है. लेकिन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो सर्वाइव इसीलिए किया है कि पैटर्निटी जो है, वल्दियत जो है बच्चे की, वो इंश्योर करने के लिए कि हमारा ही बच्चा है. इसलिए हम इस बीवी को भुगत लेंगे कि कम से कम ये बच्चा हमारे देगी और वी विल स्केप डेथ. हम आई स्केप डेथ बिकॉज आई लीव माई जर्म प्लाज्म ओवर हियर इन दिस वर्ल्ड. और तो ये अपनी हमारी जीन्स जो हैं उनको हम इस दुनिया में छोड़ के जाएंगे. ये इसका अंडरलाइंग साइकोलॉजी है जो आपका सब्जेक्ट है. अंडरलाइंग साइकोलॉजी इसकी ये है. अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो लज़्ज़त यकजाई जिसका इकबाल ने कहा है, लज़्ज़त यकजाई, तो वो यही है कि लज़्ज़त यकजाई की पूरी फीलिंग यही है कि रिप्रोडक्शन को इंश्योर करना, कि और जानवरों में भी और इंसानों में भी. बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनमें इंस्टिंक्ट होता ही नहीं, मतलब ये इंस्टिंक्ट होता है 100%, कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती है. शहद की मक्खी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इंस्टिंक्टिव होता है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं. उसका तो दिमाग इतना छोटा होता है कि वो तो सोच नहीं सकती है. और जहाँ तक अभी किसी ने जो हज़रत बैठे हैं हमारे पीछे, इन्होंने अभी जो सवाल किया कि सेक्सुअल सिलेक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल सिलेक्शन जो है उसकी बेसिस भी यही है कि हम कोई मर्द जो है किसी औरत को या कोई औरत किसी मर्द को कैसे सेलेक्ट करती है. उसमें अंडरलाइंग फैक्टर्स क्या हैं. उसमें अंडरलाइंग फैक्टर्स जो हैं वो यूजेनिक हैं, मतलब किस तरह से हम ह्यूमन रेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ह्यूमन रेस या अपनी स्पीसीज़ की रेस को इम्प्रूव कर सकते हैं. मोरनी जो होती है, मोरनी, अगर आप 4 मोर 5 मोर एक लाइन से खड़े कर दें और मोरनी जो है वो सेलेक्ट करना है उसको इनमें से एक मोर, तो वो कैसे सेलेक्ट करेगी? वो ऐसे सेलेक्ट करेगी, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भरे पड़े हुए हैं, आप देखिएगा. ऐसे सेलेक्ट करेगी कि जिस मेल मोर में सबसे ज़्यादा मार्किंग्स हों, वो पैसा जो कहलाता है ना हम लोगों का, हम लोग जिसे पैसा कहते हैं, मार्किंग जो होती है मेल मोर में, क्योंकि वो डांस जब करता है मेल मोर
मोर ही डांस करता है, तो जब डांस करेगा तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से वो हमेशा इतनी जल्दी आप गिन भी नहीं सकते हैं, लेकिन मोरनी गिन देती है कि किसकी मार्किंग ज़्यादा है, किस मेल की मार्किंग ज़्यादा है, उस मोर को सेलेक्ट करती है, उसके साथ जाती है और रिप्रोड्यूस करती है। तो ये इस तरह की चीज़ें, तो उसमें यही है कि इसको रेस को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें, ये इसका अंडरलाइंग फैक्टर है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Assalamu alaikum everyone. अच्छा, I have two things to say. सबसे पहले तो शोपेनहायर जो थे या जो थी, इट्स द 21st century, आई वोंट अज्यूम जेंडर, लव का एक बहुत ही लिमिटेड आप एक कह लें कि इन्होंने डेफिनेशन ली है। जो आपकी कंटेम्प्रेरी डेफिनेशन है या जो ज़ुबान ज़द आम डेफिनेशन है, इट्स मच वाइडर। और एग्जैक्टली इनकी भी जो डेफिनेशन है, ठीक है, जिसके अंदर आप यूनियन ऑफ मैरिज डिस्कस कर रहे हो, आप रोमांटिक रिलेशनशिप्स डिस्कस कर रहे हो, वो भी अब बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट लाइक बिटवीन टू जेंडर्स एनी मोर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस। नंबर टू, आई वॉज थिंकिंग दैट इनिशियली यू ड्रू पैरेलल्स between will and logic, will and intellect. You said that will is supreme. Intellect को लगता है कि वो कंट्रोल कर रहा है, बट इट isn't. और फिर एक पॉइंट आता है, once you get married, you are unhappy because उस वक्त आप लोगों की जो will है वो रूल कर रही थी, not your intellect. ठीक है, आपकी इंडिविजुअल इग्नोर हो रहा था, ठीक है। बट आई एम समवन हु डजंट बिलीव इन एब्सोल्यूट्स। मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा कि मुझे टोटली विल कंट्रोल कर रही है। आई थिंक दैट देयर इज़ अ पॉइंट, मे बी मैं वो अचीव ना करूँ, मे बी हम वो अचीव ना करें, देयर कम्स अ पॉइंट वेयर विल एंड इंटेलेक्ट आर इक्वली स्ट्रांग। ओके, वो दोनों के कोई एक दूसरे के ताबे नहीं है, वो दोनों एक कंजंक्शन इन टैंडम में वो चल रहे हैं। आई थिंक कि मेजॉरिटी ऑफ अस, लाइक हमने जितनी भी इर्द गिर्द देखा, ये वो सारी मैरिजेस, बहुत सारी मैरिजेस अनसक्सेसफुल होती हैं, वो बेशक लव मैरिजेस हों, अरेंज मैरिजेस हों, ठीक है। अरेंज मैरिज एज अ लाइक अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ज़्यादा आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग है, तो इस तरह आपने उसे बोल दिया कि ये ज़्यादा सक्सेसफुल रहती हैं, ठीक है। बट उनमें हैप्पीनेस का फैक्टर है कि नहीं, मैं ये नहीं जान सकता, ठीक है। आई थिंक एक सक्सेसफुल मैरिज, एक सक्सेसफुल यूनियन उस बंदे के लाइफ में आ सकता है जिसके पास जो उसका इंटेलेक्ट है वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो विल के साथ काम कर रहा हो, ठीक है, विल के ताबे ना हो। और मे बी ये पॉइंट इस तरह आता है, इंटेलेक्ट स्ट्रांग होने से मुराद इसके अंदर ये है कि उस बंदे की सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ इस्टीम, वो जब इस पॉइंट पे पहुंच जाए कि उसे एग्जैक्टली पता हो कि व्हाट ही और शी इज़ लुकिंग फॉर इन अ पार्टनर, एंड ही इज़ और शी इज़ एबल टू जज दैट। आई थिंक कि इस तरह का यूनियन बना हुआ, एंड द अदर पर्सन शुड ऑल्सो बी केपेबल ऑफ दैट, वुड बी अ हैप्पी मैरिज, ठीक है। आई नो दिस सिंगल्स आउट के मे बी इन अ मिलियन मैरिजेस देयर आर लाइक 10 सक्सेसफुल मैरिजेस, बट आई थिंक दैट इज़ द ट्रुथ, ठीक है। इसी तरह के स्केल्स हैं, देयर आर नो सक्सेसफुल मैरिजेस ऑलमोस्ट, सो दैट्स जस्ट लाइक व्हाट आई थिंक। थैंक यू। Thank you so much, Talha. It was a pleasure listening to you. I have a few comments. Firstly, the portrayal of love in this essay is, I think, entirely inadequate. And other than that, of course, as Sir mentioned, it's sort of obsolete now. But sure, there are some truths, some hard-hitting truths in there, if we venture to find them. And I would like to comment on what Sir said, and I would agree with my brother here, that it does, what Sir mentioned about hormones and all of that, it does explain how it happens, but it still doesn't explain why it happens. And I think it's self-evident in the title. It's metaphysics. It's, some would say it's a pseudo-philosophy. It's not even philosophy. It's just stories you make up, and they're not verifiable. But if we were to entertain this thought,
in this day and age where we have a constructionist school of thought, where we have eco-criticism, so I would like to say the very idea, the very act of sharing this essay is constructing a sort of idea of love that Schopenhauer perhaps purported. Other than that, on a lighter note, I think Schopenhauer was a closeted romantic. I mean, I haven't seen this ardent of a defense of the union of love and sex ever, not even in romantic writers. And then we have the specific point was the will of species and the will of the individual. And the will of species overpowers the will of individuals, and that's why we reproduce. Am I right in saying that? With certain specific. So if we look at it from an eco-critical point of view, in our times, climate change, climate disasters, overpopulation is wreaking havoc in certain places. How is that will of species then? Like, it's directly leading us to death. It's not even about survival anymore. It's directly like we are facing death right now. I know I'm sounding very gloomy, but it's Schopenhauer. So, and other than that, it's just that the constructionist school of thought, it says that we construct these ideas and then they dictate our reality. It's the very idea of love that we have in our minds, maybe because of perhaps Freud or Jung, all of them guys would agree, because of our relationship with our parents, because of our socio-cultural, socio-economic background. All of that reality is constructed, and then the idea given to us of love is constructed, and then that is dictating our own relationships. So perhaps to conclude, I have a quotation from La Rochefoucauld. He said, "Many people would not fall in love if they did not know such a thing exists." Yeah, that's my 2 cents. I would like to add something on the first point you made. Eco-criticism. Why are human beings, despite the existence of the will, leading all other human beings towards catastrophe? So, a thought occurred in my mind while I was listening to your comment. The thought is that there are capitalists, and they also have a will, and they also want to live indefinitely. So they amass wealth, and in that process they destroy the environment. So the will of a few individuals, the will is not harmony. Not one will is driving all human beings. So the will of the capitalists is at odds with the will of the environment, of the non-capitalists, the people who are victims of eco-related disasters. And when they clash, understandably, the will of the capitalists will prevail. So I think that is what is going on right now. जनाब, मैं आपसे मेटाफिजिक्स ऑफ लव में एक मुख्तसर सा सवाल है कि इंसान एक दूसरे को, यानी मुतवज्जा तो तमाम होते हैं, मगर अचानक किसी पर जाकर मुतवज्जा हो जाते हैं, या किसी बच्चे पर, जैसे उससे आसनाई है, जैसे मोहब्बत है उससे, तो ये फिज़िकली तौर पर इंसान के अंदर क्या विटल पावर में आते हैं या पुरानी याद? I believe there is a difference between what Schopenhauer, the type of love that Schopenhauer is trying to explain. That love is the romantic love, not the love that we experience towards maybe every living or non-living thing in this world. So there is a difference in these two things. कि वो romantic love के बारे में बात कर रहा है और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो उस तरफ लेके जाते हैं, और ये एक्सप्लेनेशन शायद अप्लाई नहीं होती रोमांटिक लव के अलावा किसी भी तरह के लव पर. छोटा सा वो चूँकि ये जो बड़ी अच्छी डिबेट शुरू की है ना कि ये जो विल और इंटेलेक्ट और
लॉजिकल थिंकिंग है. अब ये विल जो है, मतलब कोई रोमांस की भी लिव ले ले, कोई भी विल ले ले, वो एज के साथ देयर डिक्लाइंस. अगर रफली स्पीकिंग करूँ तो ये उनका कर्व बनता है, क्योंकि आपकी विल एज के साथ रिड्यूस हो जाती है. कोई भी विल हो, मैं एज के साथ कर रहा हूँ, कोई किसी भी पैरामीटर के साथ होता है. लेकिन जो आपका इंटेलेक्ट है वो अदर वे राउंड चल रहा होता है, दैट इज़ गोइंग अप. तो इसको भी वो किसी हवाले से एड्रेस करता है, क्योंकि विल एब्सोल्युटली विल तो नहीं होता है, यानी आप टाइम कंस्ट्रेंड होता है वो जिस तरह. तो इस पे भी कोई वो कमेंट करता है कि नहीं, क्योंकि ये नेचुरल और इस्टेब्लिश है. मेरा ख्याल शोपेनहावर को ये भी पता था कि अब एक 14 साल की उम्र के या 18 साल के एज के जो विल है वो 80 साल के विल से फ़र्क है. और लेकिन जो इंटेलेक्ट है वो अदर वे राउंड चलता है. तो अगर इन दोनों का पॉइंट अगर हम इंटरसेक्शन कर लें तो शायद 30-40 के दरमियान कहीं बनता भी है. तो वो इसको भी कहीं एड्रेस करता है या इस तरह का. आई थिंक इसकी वो जो जिस एज में इसने ये वर्क प्रोड्यूस किया है वो है कोई आई थिंक पोस्ट 60. तो आई थिंक दैट इज़ वेरी एविडेंट कि उसको जो ये सारे ख़यालात हैं वो जब विल कमज़ोर हो गई थी तभी ही वॉज एबल टू थिंक एंड यूज़ हिज इंटेलेक्ट. तो बिल्कुल ऐसे ही है. मैंने जहाँ तक इसको पढ़ा है ऐसे को, वो यही है कि द विल ग्रेजुअली, the will that we are talking about gradually decreases and intellect takes over gradually. ओके, अभी तक जितने भी लोगों के कमेंट्स सुने उससे अंदाज़ा हो रहा है कि एवरीबडी एग्री कि शोपेनहावर ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेसिस दी, एक्सप्लेनेशन दी, बट इट इज़ स्टिल अ रिडक्टिव आइडिया ऑफ व्हाट लव इज़, बिकॉज इट ऑल्सो इट डजंट इंक्लूड द रोमांटिक लव बिटवीन सेम सेक्स एंड ऑल्सो डिफरेंट जेंडर्स. हम क्यूपिड्स की बात कर रहे थे क्योंकि समझ आ रही है कि डिफरेंट किस्म की विल होती है. जैसे कि आपने बताया कि वो कैपिटलिस्ट की विल होती है और एक जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उनकी विल होती है, एंड दे अल्टीमेटली विन. सो आई गेस देयर आर 2 क्यूपिड्स. एक गुड वाला क्यूपिड है दैट यू हैव टू अलाइन योर सेल्फ विद, एंड देयर इज़ दिस डार्क क्यूपिड. और इसमें उन्होंने बात की थी कि जब तक एक पर्सनहुड पर्सनहुड आपकी डिफ़ाइन नहीं होती, एक्चुअलाइज नहीं करते हैं आप अपनी पर्सनहुड को, तब तक उस क्यूपिड के साथ अलाइन करना भी मुश्किल होता है. लाइक आई एग्री कि शोपेनहावर का आइडिया ऑफ लव रिडक्टिव है, बट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आई थिंक अगर हम वो क्यूपिड वाला आइडियाज़ लें तो, क्योंकि लोग अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस में हमें मुख्तलिफ लोग अट्रैक्ट करते हैं. जो हमें यूथ में जिस तरह के लोग अच्छे लगते हैं वो आगे जाके रोमांटिकली हम उनको परसू नहीं करते हैं. आर प्रायोरिटीज़ चेंज. तो आई गेस कि जब तक अपनी पर्सनहुड को भी एक्चुअलाइज नहीं किया जाता है तब तक आप अलाइन भी नहीं कर सकते हैं उस क्यूपिड से. एंड मे बी दैट्स वन रीज़न ऑफ फेल्ड लव मैरिजेस, क्योंकि उन्होंने ख़ुद अपनी पर्सनहुड को अभी तक एक्चुअलाइज नहीं किया होता है. सो वी कांट से कि उन्होंने एक्चुअल वाली विल को फॉलो किया है. सो या दैट्स समथिंग. वो जो आपने बात की सेम सेक्स रिलेशंस की, तो उसके बारे में देयर इज़ स्लाइट मेंशन इन दी ऐसे. वो ये है कि आई डिड नॉट मेंशन इट क्योंकि मुझे वो ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन उसमें ही इज़ ट्राइंग टू से कि द सेंस ऑफ लव इज़ मिसप्लेस्ड, समथिंग लाइक दैट. लेकिन उसको फर्दर विजिट करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू से. दूसरा क्यूपिड तो क्यूपिड के साथ अलाइन करना मुश्किल है शायद. क्यूपिड तो उड़ जाता है अपने विंग्स यूज़ करके. सो दैट इज़ माई थॉट ऑन इट. Interesting. I mean, that's also just a theory, but interesting one. Thank you. Thank you very much.